Are you unintentionally insulting Shiv Baba? Better check. पढ़ने या पढ़ाने वाले को आंखें बंद करके नहीं बैठना है. Neither the one who studies nor the one who teaches should sit with their eyes closed. लिखत में भी प्रैक्टिस ऐसी चाहिए जो लिखते हुए भी मासूक को देखते रहें. Even while writing, you should have such practice that you keep seeing the beloved one even while writing. ये तो मोस्ट बिलेवर्ड बाप है. He is definitely our most beloved father. उनके आगे, मासूक के आगे आंखें बंद करके बैठे, ये तो इसकी इंसल्ट हो गई. To sit in front of him, in front of the beloved one with your eyes closed, this is insulting him. कोई किसी को नहीं देखना चाहता है तो मुंह फेर लेता है. When someone doesn't want to look at someone, he turns his face away from him. आंखें बंद कर ली, माना देखना नहीं चाहते. तो जैसे बाप की इंसल्ट हो गई. If you shut your eyes, it means that you don't want to look at him. So, it is like insulting the father. सीता क्या करती थी? What did Sita used to do? आंख उठा के भी नहीं देखती थी. Student, she used to sit with her back turned towards Ravan. She didn't even lift her eyes and look at Ravan. आंखें बंद. She used to shut her eyes. तो जैसे सीता ने रावण की इंसल्ट कर दी. So, it is as if Sita insulted Ravan. रावण बार बार सामने आता था और सीता उसको देखती भी नहीं थी. Ravan used to come in front of her again and again, and Sita didn't even look at him. तो रावण क्या महसूस करता होगा? So, what must have Ravan felt? है Student, insult. इंसल्ट महसूस करता होगा, फिर क्रोध आता होगा. He must have felt insulted, and then he must have become angry. शिव बाबा को तो क्रोध आने की बात ही नहीं. There is no question of Shiv Baba becoming angry at all. नाराज वो होते हैं जो राज को नहीं जानते हैं. Those who don't know the secret, that is Ras, become upset, that is Naraz. आंखें घड़ी घड़ी बंद हो जाती है तो बाप समझ जाते हैं इनका अंदरूनी प्यार नहीं है. If your eyes fall shut again and again, the father understands. These ones don't love within. शिव बाबा को तो कब नींद नहीं आवेगी. Shiv Baba will never fall asleep. स्टूडेंट कब टीचर के आगे झुटके नहीं खावेंगे. A student will never doze off in front of the teacher. वैसे भी क्लास में ये कायदा नहीं है. Anyway, this isn't the rule of the class. बच्चों को पढ़ना है ना. Children have to study, don't they? यहाँ भी तुम बच्चों को अटेंशन खिंचवाना चाहिए. Here too, you children should draw the attention of the class towards this, तो घड़ी घड़ी बाप की तरफ बुद्धि जावे. so that the intellect goes towards the father again and again. घड़ी घड़ी कहते रहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो. He keeps saying it every now and again. Sit in the soul conscious stage. देह भान में रहते हैं तो थकान आती है. When you stay body conscious, you feel tired. आत्माभिमान में रहें तो थकान नहीं आवेगी. If you stay in the soul conscious stage, you won't feel tired. तो बाप कहते हैं अल्लाह के बच्चे हो. So, the father says, you are the children of Allah. अल्लाह के बच्चे. अल्लाह माना The children of Allah. What does Allah mean? अल्लाह माने ऊंचा. Allah means elevated. तो ऊंच के बच्चे भी कैसे होने चाहिए.
So, how should the children of the elevated one be? ऊंचे होने चाहिए। They should be elevated. अल्लाह के बच्चे होकर के बैठो। Sit as the children of Allah. अल्लाह नीचे वाला है या ऊपर वाला है? Is Allah the one who resides below or the one who resides above? तो अल्लाह के बच्चे ऊपर को मुंह करने वाले होंगे या उल्लू की तरह नीचे को मुंह करने वाले होंगे? Student, the one who resides above. So, will the children of Allah have their face turned upwards, or will they be like Ullu with their head facing downwards? Ullu means an owl. Baba actually means a bat here. It also means a fool. उल्लू का मुंह नीचे धरनी की तरफ होता है। The head of an owl is turned downwards, towards the earth.